नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हर बार यही मैं एक लाइन लेकर आता हूं कि बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट्स और शूट्स के बाद मौका मिला कि आज संडे के दिन हमने सोचा कि इसी पर डिस्कशन किया जाए। और उम्मीद है हफ्ते के दौरान हमने जो शूट किया था, जो भी रिव्यूज हम लेकर आए थे, वो वीडियोस आपने देखे हों। आज थोड़ी तसल्ली से बातचीत करते हैं, थोड़ा डिटेल में बातचीत करते हैं ईवीज के ऊपर। और ये ईवीज जो है, हम टू व्हीलर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कमर्शियल व्हीकल। क्योंकि इन दोनों यानी 2 और 4 व्हीलर जो पैसेंजर सेगमेंट है, वहां पर तो हमने ग्रोथ देखा है, प्रोडक्ट्स देखे हैं, लगातार हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आ रहा है। कमर्शियल व्हीकल में भी क्या चेंजेस ऐसे ही हो रहे हैं? क्या इससे हम जो सड़कों के ऊपर होने वाले पॉल्यूशन को कम होते हुए देखेंगे? जो एडॉप्शन के चैलेंजेस हैं ईवीज कमर्शियल सेगमेंट में, क्या वो पैसेंजर व्हीकल से अलग हैं? और आने वाले 4-5 सालों में ये मार्केट कैसा हो सकता है? तो ये सब सवाल थे। इसके जवाब के लिए हमने इनवाइट किया इंदरवीर सिंह, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं EVage वेंचर के। उनसे ये सवाल आज हम पूछेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं का करते हैं स्वागत। तो थैंक यू सो मच इंदरवीर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिस तरीके से हम लोग मार्केट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बहुत ग्रो हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बीच कमर्शियल व्हीकल या कमर्शियल सेगमेंट में या कैरियर वाले सेगमेंट में ईवीज का जिक्र कम हो रहा है। वहां पर फिलहाल मार्केट कैसा है? और आने वाले, अगर हम जैसा कि ईवीज के साथ 2030 का हम लोग एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, उस वाले सेगमेंट में कैसा लग रहा है? थैंक्स क्रांति, आपने इनवाइट किया बात करने के लिए पहले। जैसा आपने पूछा, कमर्शियल ईवीज का स्कोप क्या है ओवर द नेक्स्ट डेकेड या अगले 10 साल में क्या होगा? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन का एक पर्पस है। इट इज़ टू सेव द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं। इट इज़ सेविंग द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसका बेनिफिट हो रहा है गवर्नमेंट को। एंड pollution is by far the biggest reason. So अगर आप ओवरऑल सिनारियो को देखिएगा, तो कमर्शियल व्हीकल्स आर वन नंबर ऑफ व्हीकल्स विच हैव द मैक्सिमम माइलेज। एक दिन में सबसे ज़्यादा वही चलते हैं। अगर हम खुद की पर्सनल कार की बात करें, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, दैट्स द ओनली ट्रैवल जनरली जो होता है, बारिंग अ फ्यू विजिट्स आगे पीछे। Whereas जो commercial vehicle है, they are on the road always. You'll be surprised that commercial vehicles are almost 10% of the total number of vehicles that are flying on the road right now. 10 to 15% में vary करेगा. But the pollution or the जो pollution आप उसके ऊपर attribute कर सकते हो is more than 30% of pollution caused by commercial carriers. So अगर आप इम्पैक्ट के पॉइंट से देखिए, आप माई सेंस इज दिस सेगमेंट शुड हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट, क्योंकि ये उसकी माइलेज ज़्यादा चलने की है रोज की, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है, कंजेशन सबसे ज़्यादा इनके कारण हो रहा है। मेजर मेट्रोज में अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल कैरियर्स आर नॉट अलाउड एट सर्टेन आवर्स, राइट? सो इन 3 चीज़ों को जो एट्रीब्यूट करेंगे वो कमर्शियल कैरियर्स करेंगे। सो माई सेंस इज कमर्शियल कैरियर ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, इन प्रॉब्लम्स। एंड स्लोली द मार्केट इज वार्मिंग अप टू देम। नए मेथड्स आ रहे हैं लॉजिस्टिकल सप्लाई के, विच आर इवन मोर कंड्यूसिव फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। अब जैसे कि लास्ट माइल डिलीवरी, ई कॉमर्स, राइट? वो रूट फिक्स्ड है। आपको डेली एक ही रूट पे एक गाड़ी जाएगी। You can plan the charging infrastructure, क्योंकि range anxiety is the biggest problem for conversion, as we know. So जितना ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतना ज़्यादा उसका TCO पॉजिटिव निकलेगा। बट उसमें जो आप कह रहे हैं, जब बड़ी गाड़ी हो, अभी तो छोटी जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उसी में बैटरी साइज को लेकर इतनी बड़ी चुनौती रहती है। वहाँ जो बड़ी गाड़ियां होंगी, तो वहां पर आपको लग रहा है कि अभी हम तैयार हैं, या और आप फ्यूचर रेडी टाइप की बात कर रहे हैं? सो कंपटीशन क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, देयर इज लिमिटेड इनसाइट जो मैं दे पाऊंगा शायद से। बट वी एज EVage, यस, वी आर रेडी फॉर इट। हमारी जो गाड़ी है, इट हैज टेकन करीब 8 साल हमको लगे हैं टू डेवलप द टेक्नोलॉजी
जो सूट करेगी लास्ट माइल डिलीवरी ऑपरेशंस को। करीब 2014 से हम इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव गॉट engineers who are aerospace engineers हैं, who have been working with large companies जो planes बनाती हैं globally, come together हमारे साथ आके they've worked with us to develop this platform जो ये सारी problem solve करेगा। we give the right kind of range जो पूरे दिन में चाहिए एक गाड़ी को चलने के लिए, we are providing that। कितना range? वो range कितना होगा? So the current utilization अगर आप देखोगे, it varies anywhere between 80 to 120 kilometers depending upon किस city में हो, कहाँ पे हो। So हमारी गाड़ी will do that, will solve that purpose for you। उसके बाद load carrying capacity है, that also can be taken care of। Like we have a 1-ton vehicle which is out in the public, so that is enough to carry the load। And then सबसे ज़रूरी जो बात है, the reliability of the vehicle। हम पिछले 3 साल से ऑन रोड टेस्टिंग कर रहे हैं। गाड़ी 2019 की तैयार थी। So unlike most companies, we are spending a lot of time in testing the vehicle correctly। So we have done what is right। जो चीज़ करनी चाहिए एक गाड़ी की तरह। There is a word which we use which is called automotive rigor, which generally most of the companies are not following that, at least in the pressure companies। तो हम उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट राइट हो। वंस इट्स इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर, राइट, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फर्दर। अभी हाल में if you look at the kind of news we have seen, that has obviously put a dent। जो हम लोग ईवी इंडस्ट्री के ऊपर अगर हम रेपुटेशन की बात करें, वहाँ तो एक डेंट लगा है। उसके बारे में पहले आपका रिएक्शन चाहूँगा। हाउ डू यू सी दैट, रीड दैट, एंड ऑल्सो ऑन द सेफ्टी नॉर्म्स व्हिच गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट। राइट, सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट अगर किसी भी व्हीकल और किसी भी issue के कारण somebody has to lose their life or property, which is really sad and ऐसा होना नहीं चाहिए था। So that's a unfortunate thing, and reasons could be many। काफ़ी reasons हैं, and हाल ही में जो government की report आई है, the DRDO findings also, they are saying that the quality of cells maybe is a question mark। Also we need to understand this year in India we have had a severe heat wave। Even आज Delhi is under orange category today, which means temperatures are 47 degree plus। Surface temperatures have reached 60 degrees in India। So जो demand है, और आप देखिए this last happened in 1902, so after almost a century these kind of situations have come up in India, right? So the demand from the cell in terms of the thermal performance, in terms of the vibrations, in terms of the acceleration, have been very rough this year overall। So जो तो अच्छे quality के हैं, I mean there have been both the cases, right? There have been vehicles with limited or no such issues, and then there are vehicles which have these issues। So I believe that ये solve हो जाएगा once the quality inspection of the battery start to happen। The manufacturing standards for the battery packs improve होंगे, and every supplier is here to provide a safe vehicle, I'm sure। So जो mistakes हुई होंगी, they will overcome that very soon। That I'm confident about as a industry। As far as the government testing is concerned, see, government cannot test every cell। That would obviously be the responsibility of the OE, and that's why being a OE एक बहुत बड़ी responsibility है। The safety of the occupants is your responsibility, right? So एक तो the product has to be thoroughly tested, which we at EVage have been doing for the last 3 years। हम premature product नहीं लाना चाहते हैं market में। Second, जो बहुत ज़रूरी factor है, the safety standards, जैसे the government is recommending UN 136 norms। I guess वो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है जो कॉमनाइज हो जाएगा। आज somebody like a EVage does special functional safety testing। वो हमारी खुद की प्रेरोगेटिव है। देयर इज नो नॉर्म जो हमको फोर्स कर रहा है वो करने के लिए। तो वो दैट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओई इन दिस केस आज तक।
But once the UN 136 norms and other functional safety standards come in, I guess it will become mandatory for all, and that will prove the fact that somebody like EVage जिसने 8 साल लगाए हैं इसी सब चीजों के लिए लगाए हैं ताकि ये फेलियर्स मार्केट में जाके ना आए। इसमें आप नाउ कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट वी वर डिस्कसिंग, आप बात कर रहे हैं कि 80 से 120 के आसपास की रेंज आप आमतौर पर देखते हैं। तो हम कमर्शियल व्हीकल्स आमतौर पर हम देखते हैं जिसकी बात होती है मोस्टली वो इंटरस्टेट, इंटरसिटी, लंबी दूरी वाले जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उस वाले सेगमेंट के की क्या रीडिंग है और वहाँ पे तो उस वाले सेगमेंट के की क्या रीडिंग है और वहाँ पर आप अगर हम बड़े कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें वहां पर आप कैसा भविष्य देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से? क्योंकि ये इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसके बारे में काफी चर्चा चल रही है कि कमर्शियल व्हीकल जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी उसके लिए हो सकता है वो इस्तेमाल हो जाए। So one, of course, EVage we are making last and mid mile delivery vehicle. हमारा focus है to get goods to your house from the warehouse or warehouse to warehouse delivery within the same district or city. So that is the focus because of the limited use case. As far as large frame trucks कह लीजिए आप या long distance long haul applications जिसको हम बोलते हैं, there are certain factors, right? सबसे ज़्यादा is the cost of the fuel is pretty high, and due to the geopolitical scenarios, I think it is going to be this way for some time. It's a new normal. I remember when I was in college आज से 30 साल पहले $100 per barrel पहली बार कभी दुनिया में पहुंचा होगा ऑयल का प्राइस, and today it is the new normal. I think it's not hyped up as it was maybe 2 decades back. So I mean this high prices may sustain for some time. So उसके लिए one we need more efficient and economic means of transportation. और वो would be the biggest factor जो drive करेगा long haul vehicles को, and then the mindset of the users on understanding के भाई ये vehicle TCO positive है rather than cost positive, right? So that change will also take some time to set in. As far as the EV versus green hydrogen जो आप सवाल कर रहे हैं मेरे को, I think the long haul trucks is a matter of time. वो market में आएंगे ही आएंगे. Green hydrogen is a great product because it sort of आपका चार्जिंग टाइम कट ऑफ कर सकते हो आप अगर हाइड्रोजन है आपके पास, बट हमको समझना होगा जैसे ऑयल पंप्स हैं हमारे गैस स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक उसको 1 सेंचुरी लगी है बनने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर। So similarly, hydrogen का infrastructure, उसकी pipelines, and then हमको ये भूलना नहीं चाहिए there is hydrogen is far more volatile to carry than maybe अगर आप normal oil की बात करें, right? उसका oxygen के साथ जब interaction होगा तो it can be there can be some serious repercussions. So for such a sensitive fluid or gas to then be transported, you need to have a special infrastructure setup. And it will take some time. वो overnight तो नहीं होगा, and जब आप long haul जा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कब जरूरत पड़ सकती है आपको किस जगह पे उस infrastructure की availability की. It's a more of a chicken and egg situation. पहले infrastructure आएगा कि गाड़ियाँ आएंगी right now. Like with the electric vehicles also, वही case. Yes, it's the same thing. But I think charging station लगाना आसान है compared to a hydrogen station right now at this moment. अगर कल कोई breakthrough technology आती है तो मैं उसके बारे में comment नहीं कर सकता हूँ. Also, the production of hydrogen itself, currently जितना hydrogen produce हो रहा है, that's why I think you mentioned green hydrogen, not hydrogen, is through hydrocarbons, which again is natural gas, right? To produce green hydrogen through electrolysis or something, वो एक challenge जरूर होगा. और इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट एज अ कैरियर. पहले आप बिजली लेके इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, राइट? सो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी कुड बी फार मोर एफिशिएंट इन दैट केस. इलेक्ट्रिसिटी इज राइट अवेलेबल ऑन द ग्रिड, आपने उसको एक ट्रांसफार्मर या एक कनेक्शन देके यू जस्ट नीड टू हुक इट अप टू द होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज अवेलेबल राइट नाउ. So hydrogen will take its time.
it's a great alternative, but I strongly believe that the next few years is for electricity. Right. And market कैसा लग रहा है आने वाले टाइम में, maybe 2 to 3 years? I mean 2025 में अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, वहाँ पे बहुत एक तरह से सेगमेंटल नंबर बन गया है, जहाँ हो सकता है कि 2025 तक we might see, you know, yes, a lot of mass market छोटी इलेक्ट्रिक कार्स पहले से कहीं ज्यादा. What about this segment? यहाँ पर आपको आने वाले 2 से 3 साल में किस तरह के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं? So we should always learn from history, and there are two things which I would do. One is a trend analysis, and one is the consumer behavior. I, for one, has been working on electrification since 8 to 9 years now. So I have a experience of talking to people लोग जो कह रहे थे कि it's a crazy idea, कभी नहीं चलेगा. A truck that also electric. That was the first reaction I used to get maybe 8 to 9 years back when I started off. Say अब अगर आप देखो, the people are saying this is the future, and you are at the right place, right time. I have seen that whole journey as a entrepreneur. They must have seen those viral videos of Tesla truck, I guess. Yeah, but also you have to understand, 2014 में we just had these small format vehicles जो बाहर से import होते थे and unofficially assemble होते थे. लेकिन अब there is a validity कि yes, electric vehicles चल सकते हैं and they are strong enough. Like I went for my first voice of customer survey to the transporters. कहते बैटरी वाली गाड़ी तो लोड उठा ही नहीं सकती, आप कैसे बना रहे हो? That was the first thing. So now when we talk to fleet operators, they are pushing us to put more vehicles on the road, deliveries जल्दी की. हाँ, I wanted to understand this कि जब आप, क्योंकि वो segment थोड़ा ज़्यादा matter of fact, बहुत ही utility centric होता है और वो बहुत ही brutal होता है as a customer. So उनका reaction क्या था? That's what I'm saying. पहली बार तो they did not believe that a battery operated vehicle could push full weight. उसके बाद हमने trials किए, study किया, put out the vehicles, and over 3 years of trials, a lot of our customers have been working with us. हमने कोशिश की, we go to the major e-commerce players, उनके लिए co-create किया जाए vehicle rather than, India में क्या है, the delivery ecosystem अगर आप देखो, it has not changed over the last 3 decades. Hub and spoke system चलता था, आज भी hub and spoke system वाले vehicles हैं जो कि यूज हो रहे हैं fulfillment center वाले approach में, right? There is no tailor-made vehicle to meet these requirements. That is the difference we bought. We understood the gap in the market. It is not about electric, no electric. It is about the utility you offer to them. Once that is there, then electricity becomes just a medium to create a better TCO for our customers. So, but when they understood there is a TCO parity, there is a lot of savings. It is far more reliable than a combustion engine क्योंकि parts कम है इसमें. Possibility of going bad is also come if it is manufactured well, of course. So then people have started to warm up, and there is this huge demand. हमारे पास है अब आज 8 साल लगे उसको बनने में, but So how many have you, like, what's your number? I mean, if you talk about we'll be launching it right now, but we have been talking to key select customers, and the numbers runs into thousands of vehicles. Safe to say we are booked for the next 2.5 years. ये bookings हैं हमारे पास. Of course, it's not official. Once when we production चालू हो जाएगी, we'll start to take advance bookings, and then we can share those numbers. And as a company, we are very conservative of not taking bookings till we are ready for production right now, unlike a lot of companies that do that. So एक तो वो है. So और अब हम बात कर रहे हैं, so everybody wants to convert. It's not only fleet operators, you and me. Earlier we were saying let's wait and watch कि next गाड़ी हम EV लें कि ICE लें. ये बातें चलती होती थी सोशल सर्कल्स में. अब इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि हम वेट करें, इट्स अबाउट कि नेक्स्ट गाड़ी EV लेनी है. दैट इज द कंज्यूमर बिहेवियर जो चेंज हुआ है. एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, राइट? कन्वर्जेंस ऑफ फैक्टर्स. अब आप अगर हेनरी फोर्ड की बात करें, व्हेन ऑटोमोबाइल्स कमर्शलाइज हुई थी, the first vehicle came out in 1903, 1902, around that, so early 19th century में आया था. उसके बाद से 1921 का टाइम देखें या 22 का टाइम देखें या अगले 30 साल का टाइम देखें, 1900 to 1930 का अगर आप टाइम देखोगे, 1903 में आई थिंक only 1% of the vehicles were automobiles, बाकी हॉर्स कार्ट्स थे.
right? And in those 3 decades अगर आप देखो 97% converted to automobiles. खाली 3% जो थे horse cars रह गए थे. And that decade or those 3 decades are huge because the first Great World War happened there, first war. Second, the greatest depression of our times took place then. But it could not stop the revolution of automobiles to hit the world. So I think the EVs same trajectory follow कर रहे हैं. We are reaching the inflection point right now for conversion. And once when उसको 20 साल लगते हैं बनने को inflection point को. Once you're there, then it's a tipping point. And at that point, the demand है that will go through the roof. Something similar we see in the two-wheeler story जो बन रहा है अभी हमारी आप देखोगे. Year on year, the growth is just in double, triple digits, whereas the overall automotive industry is almost flat right now. So I guess any number you are saying that इस वाले segment में with market size क्या हो सकता है? And that's a tough one to say. It'll all it's also a question of demand and supply. If you ask me today, I'm saying कि boss मेरी जो मैं 3 साल की production plan कर रहा हूँ शायद से वो booked है. So then the question is not about कितने % हो सकता है. Question ये है कितनी demand fulfill हो सकती है इस वक्त. True, understood. That's why I use the word market size क्योंकि obviously बाकी जो players so जैसे small commercial vehicles की अगर हम बात करें the segment we are in, right? So it's a close to 5 lakh vehicle market है. And if you go by reports by the bigger consultancy firms, India may be lagging in overall electrification as a percentage, but still it's going to be a healthy double-digit percentage that can be pulled off out of these vehicles जो बन रहे हैं, small commercial vehicles at least. And this could be the next 5 years we are talking about. Yeah. So almost 25, 26 की अगर हम बात करें. That could be the potential market that could be there for these vehicles. And internationally, electric जो small commercial vehicle इस तरह के उसके लिए क्या market है? So I mean there are reports. I am not oracle who can sort of go into and tell these things. The reports say that it will be almost 2 times that of India, the growth. Yeah. But then ये सब reports हैं. Nobody said that अगर आप देखो 2008 की रिपोर्ट थी Department of Energy US की when Tesla launched their Roadster, which was a sort of a racing car kind of a thing. They had projected by 2014 US will consume 5,000 electric vehicles, and I think Tesla alone was making more than 50,000 in that year. So and then to think that they are almost 1 million vehicles now they're targeting to hit in a decade since then. You can't project these things. So basically, you're suggesting that जिस तरह से हमने electric vehicles जो passenger vehicles हैं उसमें two wheelers में market को जिस तरह से grow होते हुए देखा है, more or less commercial vehicle में भी वैसा ही adoption आता है. Yeah, it'll be standard, right? Because it solves a lot of problems. We have to understand. अगर आप मोबाइल टेलीफोनी की बात करो, स्मार्टफोन्स हैं, उन्होंने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं. I mean आज अगर मैं देखूं इन हाइंडसाइट 20 साल पहले कोई कहेगा कि 1 लाख रुपए आप फोन पे खर्चा करोगे, इट वाज अनथिंकेबल. एंड नाउ somebody like an Apple or a Samsung, I think they are selling phones in millions of numbers, right? Because they solve a problem, right? It brings you and me closer. This VC is possible. I think आज से 20 साल पहले शायद से either you had to travel to our factory or I had to come to your studio maybe. वो सब चीजें are easier now, right? And that's why we invest into the technology. And EV is similar, right? हम उसमें invest करेंगे because it will solve. TCO positive होगा, maintenance आसान होगी, pollution नहीं होगा. It's people positive. It is policy positive. It is positive for you and me as a society where we live in. So what would stop it? Thank you so much, Inderveer, with all these information आपने जो बताया. I think इस segment में आमतौर पर हम लोग discussion और information भी कम रहता है, लेकिन जिस तरीके से आपने जो सारे numbers और plus context हमें दिया, I think बहुत सारे हमारे जो viewers हैं पहले से ज़्यादा informed होंगे. And good luck with your venture. Thank you.